Yes. Today we are going to start with the topic of decentralization in India. Little reference of decentralization we had already done in power sharing. Clear? When we did the example of Belgium, at that time we had seen that how the constitution was amended and the powers were taken from the central government and they were given to the provincial governments, and then a new community government was created. Clear? So decentralization. Centralization means concentration of power in one hand or in one organization or in one person. That you have done in 9th standard when you were reading about Nazism. Clear? So decentralization means that somewhere or the other distribution of power takes place. Clear? So how it takes place, that we are going to read. So let's come to the paragraph 2. The first paragraph is the example which I gave you. So let's come to the next paragraph. That is the definition of decentralization also. You can underline in your textbooks. When power is taken away from central and state governments and given to the local governments, it is called decentralization. Clear? So I hope the definition is not very difficult to understand. Now, why this decentralization is important or why it is required? The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. So while framing the constitution and keeping the vast diversity of India in mind, clear, later on, it was thought that we could not, as we have done about the language policy also, that the regional languages were given equal importance. So we cannot, just a minute. We cannot concentrate on one set of government only, right? That would not help in resolving the issues which we might face at a far off place than from the central power seat. Now the union government functions from Delhi. Is it clear? And I told you earlier also that we have states which have population and area more than some countries of the world. So it would have been a difficult task. So to create local institution, one thing was that democracy, deepening of democracy, इसको हम कहते हैं deepening of democracy. जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, बट उसको हम कितना सक्सेसफुली, उसके फीचर्स को हम कितना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं. Clear? That actually is the test of democracy. So decentralization helps to give autonomy, clear, and makes the regional areas financially strong, and the problems can be tackled in a much better way at the local level. Why at the local level? Because we have so much language variations. हमारे अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं which are in the remoter areas जहां tribal population रहती है and they are not well versed with any other language except for their own regional language. तो अब वहां की पंचायत होगी, वहां के representatives होंगे, तो their problems can be easily forwarded and then we can have good solutions for those problems of all areas. और लैंग्वेजेस की इतनी वैरायटी है इंडिया में, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट, जब हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया तो स्टेट के अंडर क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स हैं. डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है? विलेजेस हैं. क्लियर? तो वहां भी यही सोचा गया दैट द चीफ मिनिस्टर, ऑफ कोर्स अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा कम हो गया. एक
यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या हुआ, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कम हो गया, बट एक स्टेट हमारी यूपी है और एक स्टेट हमारी सिक्किम है। सिक्किम और यूपी में यहाँ डिफरेंस देख लो, ठीक है। सच ए लार्ज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इतनी बड़ी स्टेट्स हैं और एक छोटी स्टेट है, तो हो सकता है छोटी स्टेट में कुछ कंफर्टेबल लेवल, जो कंफर्ट लेवल है वो डिफरेंट रहा होगा, बट टू गवर्न स्टेट्स लाइक यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, that would have been a difficult task. So decentralization is a best option. So let's read further. Next is that people have better knowledge of problems in their localities. Okay. Next, they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. अब जैसे हम हिली रीजन्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वी लाइक स्टेइंग इन पंजाब और इन द नॉर्दर्न एरिया, the local problems might be entirely different from those problems which the people are facing in the hilly areas, or the problems which the people are facing in the states which are in the coastal region. अब साइक्लोन्स आए, केरला है, तमिलनाडु है, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पंजाब में, हरियाणा में रहने वाले लोगों से एंटायरली डिफरेंट हो सकती हैं। क्लियर? तो अगर हमने लोकल गवर्नमेंट्स बनाई हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट कैन देन फॉरवर्ड इट टू द सेंटर, क्लियर, तो ये क्या होगा कि एक बेटर ऑप्शन होगा। एंड वी नो दैट वी हैव अ सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव एवरीवेयर। सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स गवर्नर, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर है, बट हमारे पास गवर्नर भी है, एंड वी ऑल नो that governors of the states are not elected, they are nominated by the president. तो एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास स्टेट्स में भी है। इसी तरह जब हम लोकल गवर्नमेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। हम डीसी कहते हैं, इसका डीसी, कपूरथला का डीसी कौन है, फगवाड़ा कम्स इन द कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इसका डीसी कौन है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह देते हैं, क्लियर, इसकी ये जो पोस्ट है, दे आर ऑल्सो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और ये आफ्टर दे हैव क्लियर्ड द टेस्ट, दे हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू, दे हैव गॉन थ्रू ट्रेनिंग, उसके बाद इनकी पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट्स भी सेंटर की तरफ से होती हैं ऑल ओवर इंडिया। दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्टेट। स्टेट क्या क्या है, पंजाब सिविल सर्विसेज, वो अलग है, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, दे आर हेडेड बाय अगेन अ रिप्रेजेंटेटिव्स हु इज पोस्टेड, ठीक है। आज जो डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में डीसी है, ही माइट बी पोस्टेड समवेयर एल्स, किसी और जगह पर उसकी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इनकी ट्रांसफर्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आर्मी का मैंने आपको बताया था, बट जो पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, हिमाचल जो पुलिस है, दे विल रिवॉल्व विद इन द स्टेट ओनली, वो विद इन द स्टेट ही रहेंगे, उनके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज they also have better ideas on where to spend the money, means कि जो हमारी local requirements हैं, जो हमारे पास फाइनेंशियल हेल्प आती है, तो उसको हमें प्रायोरिटी बेसिस में, प्रायोरिटी बेसिस का मतलब होता है कि हमने अपने एरिया में पहले कौन सा काम करना है, किस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो उस पे स्पेंड किया जा सकता है। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. So this is very important, that democracy goes to the grassroots level. कैसे? अब it's very difficult to meet the chief minister. It's very difficult to meet the prime minister. ठीक है? These days, message sending is there, Twitter is there, but still, that is not directly approach to the prime minister or to the chief minister of the state. अब हमारे जो local representatives होंगे, ठीक है, अब हम एक village पे आ जाते हैं,
We know that we have nearly more than 60% of the population living in rural areas in India, because agriculture is the main occupation still. No doubt secondary and tertiary sector are improving, but still there is a lot of improvement required in the secondary sector to create jobs. और अब ये जो पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हुआ है? सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर. क्लियर? आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि टर्शियरी सेक्टर में ऑल प्रोफेशनल्स. तो अब क्या हो गया? ऑफिसेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई. क्लियर? एंड द एम्प्लॉयमेंट इज अफेक्टेड. बट जो प्राइमरी सेक्टर है वो फंक्शन कर रहा है. क्लियर? एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन. तो हमारी बहुत सारी लेबर रिक्वायरमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट की कंजम्पशन है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, एंड दैट इज एग्रीकल्चर एंड ऑफ कोर्स रूरल एरियाज. रूरल में चला जाता है वो. तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, ठीक है, जो हमारी लोगों की, हमारी का मतलब है लोगों की रीजनल लेवल पे, एक लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स को समझ सके एंड उसका टाइमली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके. अब सपोज एक गांव से, एक छोटे से गांव से किसी ने चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया, एप्लीकेशन लिखी, फिर उसके 3-4 स्टेप्स थे, वहां तक पहुंची, कब पढ़ी, कब उसका रिप्लाई आया, ठीक है, तो कब उसका सोल्यूशन मिलेगा? व्हेन द प्रॉब्लम हैज एग्रीवेटेड? नो. सो दैट टाइम दैट विल नॉट सॉल्व द इशू. तो इशू हमारा कब सॉल्व होगा? जब हमने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच किया, दे आर ऑल्सो फेमिलियर विद द लैंग्वेज, विद द रीजनल लैंग्वेज. अब हमने कहा है व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी इज रीडिंग एंड राइटिंग इन योर ओन रीजनल लैंग्वेज. नॉट नेसेसरी दैट यू आर फेमिलियर विद अदर लैंग्वेजेस. हिंदी आती है आपको, इंग्लिश आती है, दैट्स नॉट नेसेसरी. यू शुड. अब हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी क्या है कि जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, इन द बिगिनिंग वी शुड आल्सो गिव दैट इन द रीजनल लैंग्वेज, बिकॉज चिल्ड्रन आर, देयर फर्स्ट स्कूल स्टार्ट्स फ्रॉम होम. यू लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज, दैट इज योर, तभी हम कहते हैं ना मदर टंग. मदर टंग हम क्यों कहते हैं? बिकॉज द फर्स्ट लैंग्वेज विच यू लर्न फ्रॉम होम. ठीक है, अगर आपको हिंदी आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, that shows that which language is more frequently spoken at your home. तो इसी तरह एक रीजन में जो रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो उनको इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू रिप्रेजेंट दोज प्रॉब्लम्स इन अ मच इफेक्टिव वे. सो लेट्स रीड फर्दर. Yes, this helps to inculcate a habit of democratic participation. जैसे मैंने आपको बताया that we are bringing democracy at the grassroots level. Local governments is the best way to realize one important principle of democracy, namely the local self-government. Clear? तो इससे क्या होता है कि एक हमारे अंदर एक भावना आ जाती है कि हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Clear? It's very important for us to participate. जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूल का एग्जाम्पल देके बताया था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड कर देते हैं. तो जितनी ज्यादा, अब कई बार क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को मॉनिटर ना बनना हो तो उसको कितना बुरा लगता है कि मेरे को तो मैम ने मॉनिटर ही नहीं बनाया. ठीक है, तो जितना ज्यादा हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब में करते हैं, ठीक है, हम रोटेशन में मॉनिटर बनाते हैं, 1 वीक के लिए बनाते हैं, 15 डेज के लिए बनाते हैं, तो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दैट हाउ इट इज. हम जब दूसरा बच्चा मॉनिटर होता है तो तब हमें नहीं पता लगता. व्हेन आई बिकम और आई टेक अप दैट पोस्ट, देन आई कम टू नो दैट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, तो मेरी पार्टिसिपेशन के साथ आई ऑल्सो कम टू नो अबाउट so many such responsibilities. Okay, now next is the need for decentralization was recognized in our constitution. Since then there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns, panchayats in the village and
municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of the state governments. Election to these local governments were not held regularly. Clear? Distribution of power to थी, but उसमें एक system नहीं था. Earlier we had introduced, but हमारे पास एक सिस्टम नहीं था, उसको प्रॉपर सिस्टम से हमने उसको हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे. Election to these local governments were not held regularly. Local governments did not have any powers or resources of their own. Thus, there was very little decentralization in effective terms. तो theoretically तो हमारे पास था division, but practically जैसे उसको हम experience कर रहे थे, तो we were not finding it that it's very successful. जैसे अब हम president के powers के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, हमने उसमें पढ़ा था पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वी रेड अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के पावर्स बहुत हैं, बट जब हम उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो वी सी दैट द प्रेसिडेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्मिंग द सेरेमोनियल फंक्शंस ओनली. इफेक्टिवली द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म. सो सिमिलरली हमें थ्योरेटिकली देखने के लिए तो हमने पावर डिवीजन कर दी, हमने पावर डिवाइड कर दी, बट दैट डिड नॉट लुक इफेक्टिव व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली. A major step towards decentralization was taken in 1992. This is important, you can underline. The constitution was amended to make a 3-tier of democracy. Now, TIER, the pronunciation is, if you speak it tier, TEE. जब आपने इसको बोलना है तो इसको TEER सोच के बोलना है. Spelling different है, but when you have to give the pronunciation, it's not tier. Clear? So that's different pronunciation. It's tier, TEER. So the constitution was amended to make the 3rd tier of democracy more powerful and effective. So what happened in 1992? We'll read. These are important. So side by side, you can tick mark here for learning. Yes. Now it is constitutionally mandatory. Mandatory means now it's compulsory. Mandatory means something which we have to do, we must do. Mandatory to hold regular elections to the local government bodies. So now elections is a regular process, and as we have our assembly elections, we have elections to the Lok Sabha regularly at a 5-year gap. But ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस है, इसमें स्टेट वाइज कहीं थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हैं. दैट डजंट मैटर, बिकॉज जैसे अब पंजाब है, पंजाब में 5 इयर्स के बाद होती है. कोई ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां 3 इयर्स, कहीं 2 इयर्स के बाद भी हो जाती हैं इलेक्शंस. नेक्स्ट, सेकंड इज seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. This we already know, you have done again in 9th standard. This policy of reservation, clear, was adopted to give a effective representation to those categories of people to whom it was thought that they could not, or they suffered, okay, over the years. We know that we had a Varna system and certain categories of people suffered. They could not come up in the society. So to keep the interest of those people also in mind, this policy of reservation was started. Next, at least 1/3 of all positions are reserved for women. So there is a variation in this also. Slowly over the years in states like Punjab, Odisha, and West Bengal, the reservation has gone up to 50%. So now we see that we have many women sarpanch also in different villages, and some very young women sarpanch are doing tremendously. They are doing such tremendous effort, and they are very successful in their respective areas. Next is an independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayats and municipal elections. So recently we had elections in Punjab. आज से पहले पंचायत की भी हुई थी, उसके बाद municipal corporations की भी हुई थी. But फगवाड़ा में due to some reasons the municipal corporation elections had to be cancelled.
तो अभी उसके बाद की हमारे पास न्यू डेट नहीं आई है. There was some problem which the state election commission saw. So as a result, the elections, municipal corporation, local elections जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी. तो अभी तक न्यू डेट नहीं आई है. Next is rural local government is popularly known by the name of पंचायती राज. अब हम नीचे से अगर चलते हैं, villages से हम चलते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है वो है पंचायती राज का. Each village or a group of villages in some state has a ग्राम पंचायत. ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस कई बार क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा विलेज होता है, तो उस इतने छोटे से विलेज को एक अलग से पंचायत देने की जगह हो सकता है एक या दो विलेजेस को क्लब कर दिया जाए. ठीक है, तो अदरवाइज ये हर एक विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है. ग्राम विलेज, ठीक है, हिंदी वर्ड. पंचायत इज दैट इज अ काउंसिल ऑफ 5 members which is headed by a sarpanch. This is a council consisting of several ward members, often called panch, and a president or a sarpanch. They are directly elected by all the adult population living in that area, in that ward or a village. It is the decision-making body for the entire village, and the supervision is done by the ग्राम सभा. अब ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा में वो सारे लोग आ जाते हैं, those who are eligible to vote. And we know that any person who is the citizen of India and has attained the age of 18 years, you have read about the universal adult franchise. It means all have the right to vote provided they are Indian citizens, clear, and they have acquired the age of 18 years. So that is the Gram Sabha. The Panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. All the voters in the village are its member. मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सो जितने भी उस विलेज के जो एलिजिबल वोटर्स हैं, they are the members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. तो ग्राम पंचायत ने विलेज में क्या काम किया, ठीक है, और जो उसने उसको रिव्यू करने के लिए, कुछ फ्रेश इश्यूज को लेने के लिए, टेकअप करने के लिए इनकी जो मीटिंग है वो 2 या 3 बार साल में इनकी मीटिंग होती है. क्लियर? So for today, we will do this much only. So tomorrow we'll start next topic. So if you have any doubts,